हम अपने वर्ब की तरफ वर्ब की बात करें तो वर्ब का मतलब तो कोई चीज़ एक्शन स्टेट या हालत, ठीक है, तो हम उसे वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब होती है जो हमें किसी पर्सन और चीज़ के बारे में बताती है। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, इट इज़ देयर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कह दिया कि वर्ब किसी काम का करना, होना, एक्शन होना, ये स्टेट किसी हालत को बताते हैं। और उसने ये भी यहाँ हमें बता दिया है कि वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। हमें मालूम है दो तरह की वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब के आगे फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास जो हैं वो रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टैटिक वर्ब। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और ये फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है रोशाना टेक्स हर मील्स इन द आफ्टरनून, तो टेक्स लेना है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है मशरिक से निकलता है। द शी हैज़ लर्न द लेसन, सबक याद कर लिया है। गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गाना गा रही थी। ही स्पीक्स द ट्रूथ, उसने सच बोला था। वो सच बोलता है, सॉरी। इन तमाम में जो अंडरलाइन वर्ड्स एंड टेक्स, राइजेस, लर्न, सिंगिंग, स्पीक, ये सारे वर्ब हैं। अब वर्ब में रेफर टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। हम वर्ब जो होते हैं वो हमें प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम के बारे में होता है। इसलिए फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो हम रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट लगाते हैं, रेलेवेंट टू द टेंस लगाते हैं। उसमें दो हो जाती है, एक मेन वर्ब हो जाती है और एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं यहाँ पे, तो उसमें हम लोग ये देख लें। इससे फिर वो मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहती है? मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग रहती है। आया टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। A verb that refers to the present time is said to be in the present tense. A verb that refers to be the past time is said to be in past time. A verb that refers to the future time is said to be in a future time. ऐसी वर्ब जो हमें मेन वर्ब जो प्रेजेंट टाइम के बारे में बताएगी तो वो प्रेजेंट टेंस से रेलेवेंट होगी। जो पास्ट टेंस बताएगी वो जो पास्ट टेंस से रेलेवेंट होगी। जो फ्यूचर टेंस से रेलेवेंट होगी तो वो फ्यूचर हो जाएगी। तो वर्ब जो है, अब वर्ब का एक बहुत लंबा टॉपिक है। अभी हम यहाँ तो वर्ब के एक टॉपिक डिस्कस करें। वर्ब दो तरह की होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट होती है। फाइनाइट वर्ब है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाते हैं। फिर मेन वर्ब के आगे फर्दर टाइप्स हैं। इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जेरेंट है, यानी वर्ब जब जो है आई नाउन के तौर पर ऐड करती है। पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। दोनों जब इसके तौर पे ऐड करते हैं, वर्ब जब एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करते हैं। और इन्फिनेटिव जो है वो टू आता है और बेर इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट टेंस के टाइम के वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस हैज़ फोर फॉर्म्स, ठीक है। आपको पता है प्रेजेंट टेंस के चार टेंसेज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे सिंपल टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is tense is used to express general statement and describe act that are habitual or usual। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में हम तीन चीज़ें करते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं। पहली चीज़ हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरल हैबिट्स पाते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई वॉश माई फेस, तो फिर आई ब्रश माई टीथ। तो ये सारी हैबिट्स हैं। उसके अलावा जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग्रूब होता है, तो नेचुरल इवेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। उसके अलावा जो मॉरल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल, इट रेन्स इन विंटर, तो ये एक रेन से बारिश होती है, हैबिट है। वर्क हार्ड ऑल डे, ये भी एक हैबिट है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूरज मगरिब में ग्रूब होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। आई डोंट टेक माई मील्स एट नाइट, आई डोंट टेक भी लग सकते हैं। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है और ऐसा एक्शन होता है जो कंटिन्यूस होता है, बोलता चला ही जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। एग्जाम्पल, इट इज़ रनिंग, बारिश हो रही है। अब कब तक हो रही है, कब तक नहीं हो रही, तो ये हमें मालूम नहीं है। द बॉयज़ आर टॉकिंग, तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे पास। नीचे यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज दी है, पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंटेंस, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस को देखते हुए आपने करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आइए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, शी लव हर कैट वेरी मच, तो शी सिंगुलर है तो शी लव्स हर कैट वेरी मच हो जाएगा। ही प्ले गो है तो ही गो नहीं होगा बल्कि ही गोज होगा टू स्कूल एवरी डे। इट रेन्स एट प्रेजेंट, दे होगा तो दे टीक एवरी मॉर्निंग। फन में मिस पर आ गई है वैन वाले की, पूरे आई है आपकी।
Abdashi has been playing the piano since 2 o'clock. I have been waiting here for 2 hours. The pocket has been lying there since morning. The word since and for are commonly used for with the present perfect and present perfect continuous tense. Since is used to indicate the point of time when the action began and for to indicate the period of time lasted up till now. Simply ये कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हमारे पास ऐसे टेंस है जिनका पास पे काम शुरू होगा लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं, वो चल रहे हैं और उसके लिए हम सिंस ऑफ फोर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस जो है जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फोर का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा फिक्स्ड होता है, उसमें कोई भी अनबैलेंसिंग मौजूद नहीं होती। तो सो वी आर यूजिंग सिंस एंड फॉर विद प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous tense. Put the verbs in the correct form of the present perfect continuous. I already take 3 cups of tea. I already taken 3 cups of tea. I not see you since Monday. I have not seen you since Monday. My brother not write to me for 10 years. My brother क्या हो जाएगा has not been written to me for 10 years. Since she learned French for over 2 years. She has been learning French for 2 years. The book lie on the table for weeks. The book has been lied on the table for weeks. He not speak to me since March. He has not been speaking to me since March. She sleeps since morning. She has been sleeping since morning. How long you wait here? How long you have been waiting here? He stand in the sun for an hour. He is standing in the sun for an hour. He has been standing in the sun for the hour. So these are the exercises. उसके नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के फोर होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect continuous tense. Past indefinite tense is used to indicate a single act or an action in the past. I had a cup of tea in the morning. A past definite tense is also known as simple past. So don't be confused with past indefinite or simple indefinite. Is also meaning simple where the work is not completely indefinite. I had a cup of tea in the morning. She went to school an hour ago. Kaldasm worked very hard. He sold newspapers for a living. She shouted, shut the door softly. So these are the sentences and examples of past indefinite tense. Now moving towards the past continuous tense. Past continuous tense represents an action which was going on some point in the past. So she was doing her home task when the guest arrived. I was reading a book when the bell rang. They were going to school when the storm broke. वो स्कूल जा रहे थे जब बारिश या तूफान रुक चुका था। The continuous tense is very simple because many students easily get and make translation of these sentences. Exercise पे जाते हैं, हमारे पास क्या है? Put the verbs in brackets in the correct form of the past indefinite or continuous. It began to rain in an hour ago. It began to rain an hour ago. How long ago you come here? How long ago you came here? She not hear any noise. She not here. She is not hearing any noise. He ride a bike when he meet an accident. He is riding a bike when he met an accident. He left 20 minutes ago. He left 20 minutes ago. I go to airport when I see her. I went to airport when I seen her. The light go out when we have. It went out when we have dinner. She sing a song when I enter the room. She is singing Hogarthi when I enter. I meet her in the plane. I met her in the plane. I make tea when the doorbell. I am making a tea. I was making a tea when the door is rang.
Okay, the further is now we have past perfect tense. Past perfect tense is very simple, in which the work is completely done in the past. Past perfect tense is used to describe an action completed at some point in the past. I had left the house before it started raining. They had taken their meals before the guest arrived. ठीक है, तो दे हैड, आप अगर दो जुमले आ जाते हैं ना जो में कंपाउंड सेंटेंस है, तो उसमें आप सबसे पहले परफेक्ट क्या करेंगे और फिर उसके बाद आप सिंपल पास लगाएंगे. जैसे यहाँ लगा हुआ अभी है, दे हैड टेकन देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Past perfect continuous tense is used to describe an action which had been going on for some time and finished at some definite time in the past. She had been working since morning. It had been They had been playing cards for 6 hours. वो 6 घंटे से कार्ड खेल रहे थे. ठीक है, तो since and for is used. Since is used for the point of time and for is used for period of time. So yeah. So in these examples, we have been seen that the rain and other things that happened in the environment are with the point of time that we are using since or for. Since is used for the point of time, whereas for is used for the period of time. So all these things that we are talking about in present perfect continuous tense or past perfect continuous tense, they are indicating that the action is starting in the past but it is still continuous. सो एक्शन पास में हो गया है तो ये स्टिल कंटिन्यू है. सो उसको बताने के लिए हम या तो फॉर लगाते हैं या फिर सिंस का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है. शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड, तो उसने बचपन में यूरोप में विजिट किया था. शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड, बचपन में थी. पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म आइदर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो ऑलरेडी आफ्टर यू लीव आई वेंट टू स्लीप. आफ्टर, ठीक है, आप यू लीव आई वेंट टू स्लीप नहीं होगा. आफ्टर यू हैव लेफ्ट, लीव लेफ्ट, आई हैव बीन गोइंग फॉर स्लीपिंग. टाइम 7:36. सॉरी, आफ्टर यू लीव I have went to sleep. After you had left, I went to sleep. ये होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दो सेंटेंस से पैसे परफेक्ट करना है. फिर they take their breakfast after they had washed their hands. They took their breakfast after they had washed their hands. I work on this assignment for this month. I had been working on this assignment for a month. Ali prepared for his examination since Ali had been preparing for his examination since October. She asked why we had wanted to leave early. I asked her what places the visit in Europe. I asked her what places she had visited in Europe. The sun not rise before we were ready to leave. The sun had not been rising before we were ready to leave. Before we I had never seen snow before I go to the Murray. I had never seen snow before I went to the Murray. Now the future tense. Future tense is very important. Future tense has 4 forms: future indefinite, future continuous, future perfect continuous tense. बात करते हैं फ्यूचर टेंस. ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात करें. फ्यूचर टेंस 4 फॉर्म्स: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल एक्ट दैट इज येट टू टेक प्लेस. They will leave for London tomorrow. The count will give its verdict on Thursday next. I shall see him next Monday. Future continuous. Future continuous tense is used to describe an action going to in some point in future time. She will be taking her English lesson in the morning. I shall be reading the paper. Then
they shall be playing hockey at the time. एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज हमारे पास है, put the verbs in brackets. हाँ जी, नीचे बटन कर दें, नीचे दूसरा इसको बस put the verbs in brackets in the correct form of the future tense indicator continuous. You not understand it. You will not understand it. This watch not cost very much. This watch is not costing very much. She work hard for the competition. She is working hard. I finished the exercise in an hour time. I will finish this exercise. So she is working. She will be working hard for the competition. I will finish this exercise. I not have much money. I have तो क्या होगा, I will not have much money, तो I will not have होगा much money, तो I will not have much money. Future perfect tense which is used to describe an action that will be finished by a certain future date. I shall have finished writing this novel by June next year. She will stop taking these medicines by March next year. They will left Pakistan before the end of the year. Future perfect continuous. Future perfect continuous tense is used to describe an action which has been going on continuously and has yet to complete it in the future. Let's take an example. By the next March, I shall have been working on this project for 10 years. By October next, I shall have been teaching at this college for 20 years. This tense, however, is not often used. Exercise: put the verbs in brackets in the correct form, either future perfect tense or future perfect continuous. Future perfect tense में होगा तो will have, future perfect continuous tense will have been. ठीक है जी. She finished her work before the guest arrived. She will have finished her work before the guest arrived. They write their exercise by the time the teachers arrive. They will have writing their exercise. They will have been writing their exercise by the teachers arrive. She returned from the tour of Europe by the middle of December next. She will have returned from the tour of Europe by the middle of the next December. So these are the exercises of future perfect tense or future perfect continuous tense. So you have to pay attention. आप जब तक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा. एक्सरसाइज हमारे पास आ चुकी हैं. Put the verbs in brackets in the correct form from either future perfect or future perfect continuous. She finished her work हो चुका है हमारे पास. The farmers recap the harvest before the rains. The farmers will have recapped the harvest before the rain. These mangoes reached the market by April. These mangoes will have reached the market by April. I read all the novels of Golding by the end of summer. I will have read all the novels of Golding by the end of the. This meeting will have ended by the time we gather. I hope it stopped. I hope it will have stopped. I hope it will have been stopping raining by the evening. I hope it will have been stopped raining by the evening. She take her examination by the next fall. She will have taken her examination. They complete their work by tomorrow. They will have completed the work by tomorrow. So all these are the tenses relevant to the verb. So today we are discussing finite verbs. Finite verbs है मेन वर्ब या तो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है. तो आज हमने 12 के 12 टेंसेस को भी देख लिया है कि 12 के 12 टेंसेस जो वो कैसे होते हैं और किस तरीके से वो अपने अंदर बाकी टेंसेस की वर्ब को कौन से लेते हैं, टेंस कैसे होते हैं. तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर। अगर आप नए हैं इसे शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट्स में मुझे इस इशू को बताएं, मैं आपके इसके इशू में कमेंट्स में